Hello, my name is Subhendu Das and I am the maths teacher at Manata, and today I am going to teach you one of the most important topic of grade 8, that is rational number. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से जो एक है वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है ये पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें भी जानना है, तो पहले वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को हिंदी में हम कहते हैं पूर्णांक। तो जो भी संख्या पूर्ण में है उसको हम कहेंगे इंटीजर्स। सो इंटीजर्स ये कहां से शुरू होता है? सभी नेगेटिव नंबर्स, सभी पॉजिटिव नंबर्स और जीरो। तो यानी ऑल नेगेटिव नंबर्स, all positive numbers and zero। सो इसको हम किस तरह से कह सकते हैं जो पूर्णांक में है? फॉर एग्जाम्पल हम अगर लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? जीरो दिखेगा, एक दो तीन चार, ये सब पॉजिटिव नंबर्स अप टू इनफाइनाइट यानी अनंत तक। और यहाँ पे नेगेटिव की तरफ से -1, -2, -3, इस तरह से ये भी अनंत तक। तो इसे हम कहते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अभी हम इसके अंदर हमने क्या देखा? नेगेटिव नंबर से, जीरो है पॉजिटिव नंबर से। तो अभी हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या क्या है? नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स ये है, सिर्फ पॉजिटिव जो नंबर्स है उसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। सो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो सभी पॉजिटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक दो तीन चार, ये अनंत तक चलता जाएगा, इसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में फर्क क्या है? सिर्फ बहुत बारीकी से फर्क आपको दिखेगा। देयर वेरी क्लोज गैप बिटवीन दिस। सो होल नंबर इज द पॉजिटिव इंटीजर्स and zero। Positive integers and zero is called the whole numbers. That means in natural number we have seen that it is all the positive integers are called the natural number, but if you include zero with this, so 0 1 2 3 4, इस तरह से ये चलता जाएगा अनंत तक। मतलब ये जीरो अगर नेचुरल नंबर है, एक दो तीन चार सभी पॉजिटिव नंबर्स अनंत तक। अभी होल नंबर में क्या है? इनफाइनाइट तक भी जाना है, मगर उसके साथ नेचुरल नंबर के साथ अगर हमने जीरो भी ऐड कर दिया तभी वो बन रहा है होल नंबर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में हमने क्या देखा? इंटीजर्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नेचुरल नंबर में हमने क्या देखा? सभी पॉजिटिव नंबर। और होल नंबर में हमने क्या देखा? पॉजिटिव नंबर्स और उसके साथ जीरो रहेगा तो हम इसे कहेंगे होल नंबर्स। सो दीज आर द थ्री मेजर important things. Then we will learn about the rational numbers. What is a rational number? Rational number can be negative, it can be positive, but it should be in the form of, it is in the form of p by q, okay, where q not equals to 0। रैशनल नंबर क्या है? जिस नंबर को हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, जीरो से कम हो सकता है मगर जीरो नहीं होगा। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे जान लेते हैं। बाय सम एग्जांपल्स
we can say. For example, that is if we write 5 by 7, that is the rational number, and you can see that p is the numerator here, so p is 5 and q is 7, and it fulfills the condition that q is not equals to 0. So if q is not equals to 0 and it is in the form of p by q, then we can say easily that it is the rational number. And as I have already told you that it can be negative. So minus 5 by 7, is it a rational number? Yes, it is rational number, because here the denominator is not equals to 0 and it is in the form of p by q. It can be positive, it can be negative, that is not an issue. Okay, so रियल नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया, हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर हमने ऑलरेडी यह सब पढ़ लिया बेसिक्स। अभी हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो क्या है? पहला प्रॉपर्टीज होगा क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज, सो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमें हर एक चीज को देखना है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। पहले हम आते हैं होल नंबर की, पहले होल नंबर को हम चेक करेंगे। होल नंबर के केस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ सेटिस्फाई करता है, कहाँ कहाँ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके पास क्या क्या चीजें हो सकते हैं, ऑपरेशंस क्या क्या हो सकता है। ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों ऑपरेशंस यहाँ पे हम चेक करके देखेंगे ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। वी विल चेक इन द ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। Okay, so in the whole numbers, the closure property, first we will check the addition. Okay, so इस केस में हमने क्या देखना है, हमें देखना है एडिशन में अगर हमने दो होल नंबर्स लिया तो उसकी ऐड करने पर यानी उसका योगफल जो आता है वो क्या होल नंबर होगा या नहीं होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। तो होल नंबर 0 भी है, हम 0 ले लेते हैं एक होल नंबर, दूसरा होल नंबर हम 5 ले लेते हैं, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 5 क्या होल नंबर है सर? बिल्कुल ये भी होल नंबर है। तो हमने क्या देखा, आई एम टेकिंग अ होल नंबर 0 एंड अनदर होल नंबर 5, and if you add these two whole numbers you will get 5, that is also a whole number. So if it is a whole number, so that means it is, the whole number is closed, it is closed under addition, that means it's satisfied. Okay, so that means we can now tell that the sum of two whole number is also a whole number. Now come to the subtraction, let's check the subtraction of whole number, it makes a whole number or not. For example, I'm taking 5 is a whole number, and I'm taking 9, and if you subtract you will get -4. Now tell negative number is a whole number? No, so it is not a whole number. So from here we can say if we subtract two whole number, it not necessary that it will become a whole number, that means it is not closed, not closed अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी अगर दो होल नंबर को हम घटाएंगे तो ये होल नंबर नहीं आ सकता है, तो इसके लिए हम इसे कहेंगे नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन की केस में ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। अभी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करना है, हमें दो होल नंबर्स लेना है, हम ले लेते हैं 5 और 3, इसको ले लेते हैं, या फिर ये दोनों होल नंबर है 5 और 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 15। 15 क्या होल नंबर है? बिल्कुल सर, ये भी तो होल नंबर है। तो 15 इज द होल नंबर, सो दैट मीन्स इट इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लाई।
और वी कैन से ये सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लिकेशन की केस में। मतलब हम अगर दो होल नंबर्स लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या बनेगा वो भी आपका होल नंबर ही बन रहा है। अगर हम चेक करेंगे डिवीजन की केस में, डिवीजन में क्या हो रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी देखना है। देखो हमने वही संख्या लिया 5/5 डिवाइड बाई 3, सो द आंसर इट विल बी 5/3। so now 5/3 it is in fraction, so that means it is not a whole number. If it is not a whole number, then we can say it is not satisfied or not closed under division. So हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर देखा? We learned that if we add two whole number, we will get a whole number, that means it is closed. Okay, now subtraction, if we take two whole numbers and subtract it, we will not getting the whole number, that means it is not closed under the subtraction. And multiplication we take two whole numbers and it multiply, and you will get the answer is in whole number, that means it is also closed under multiplication. But in division if we take two whole number and divide, it is not closed under division. Okay, so first the closure property for whole number we have done. Now we do the closure property in case of integers. For the case of integers, now we will check the addition property. First we will check. Okay, for the integers, so it can be negative, it can be positive. So I am taking first number negative and second number positive, and it is equals -1. So and we know that -1 is also integer. So if it is integer, that means it is satisfied. So the closure property of integers under addition, it is closed. तो हमने क्या देखा? हमने दो संख्या लिया जो कि पूर्णांक में है, नेगेटिव लिया, -6, और उसके साथ दूसरा नंबर जो है 5, दोनों को ऐड करने पर -1 आया जो कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से हमें लेना देना नहीं है, हमें क्या पता है कि नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही आपको इंटीजर्स कहा जाता है, तो ये इंटीजर सेटिस्फाई कर गया। अभी हम सब्ट्रैक्शन की केस में देखेंगे व्हाट विल बी हैपनिंग इन द सब्ट्रैक्शन। इन सब्ट्रैक्शन आई एम टेकिंग two integers. For example, I'm taking 7 and I'm taking -2, and -2 is also integer, 7 is integer. What will be the answer? 7 plus 2, that is 9. So 9 is also the integer, that means it is also closed, it's satisfied. So it is closed under subtraction. So subtraction की केस में ये satisfy कर रहा है. Okay, now move on to this multiplication. So in the multiplication के केस में हम देखेंगे दो संख्या हम लेंगे, एक हम लेते हैं -7 जो है इंटीजर, और उसके साथ हम ऐड मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा एक इंटीजर, हम ले सकते हैं कुछ भी, तो 3 ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है -21. व्हाट विल बी द आंसर? -21. -21 as we know that it is also comes under integers, because integers can be positive, it can be negative. So in the multiplication we can say that it is also satisfied, that means it is closed under multiplication. Okay, now we will check in the division. In the division it is satisfied or not. In the division, let's check two numbers. I'm taking 5 and the second integers I'm taking 8. So what will be the answer? 5/8. 5/8 is not in the form of integers, ये पूर्णांक नहीं है, it is in fraction. So it is in fraction, that means it is not integer. So if it is not integer, that means we can say that the division of two integers is not an integer, that means it is not closed under division.
ओके, सो हमने ये दोनों चीजें देखा। हमने क्या देखा, इंटीजर्स के केस में हमने अगर एडिशन मतलब दो इंटीजर्स को हमने ऐड किया तो जो इसका आंसर बन रहा है वो आ रहा है इंटीजर्स में, दैट मींस ये क्लोज्ड है। सब्ट्रैक्शन के केस में हमने दो संख्या लिया है, दो संख्या को सब्ट्रैक्ट करके दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर किया तो उसका जो फल आया है वो भी इंटीजर्स में ही आ रहा है तो वो भी क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन वी आर टेकिंग टू नंबर्स एंड और वी कैन से टू इंटीजर्स and these two integers give you the result as integer, that means it is also closed under multiplication. In the division, if we divide two integers you will not get any integer, it will get in a fraction, so that means it is not closed. So in the integers addition is closed, subtraction is closed, multiplication is closed, but division is not closed. So now we will read uh, the rational numbers. Okay, so that means the rational number, तीसरे नंबर पे हम ये चेक करेंगे कि रैशनल नंबर्स इस प्रॉपर्टीज में कैसे काम करेगा। तो रैशनल नंबर इन क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट I'll take the addition. In the addition, if you take two rational number, for example I'm taking 3 by 8 and I am taking rational number, it can be negative, it can be positive, so I am taking minus 5 by 7. So what will be the answer? It is 56. 56 it will be 21 and plus here it will be minus 40. So the answer it will be minus 19 by 56. So now we can say it is also a rational number. So it is a rational number. So if it is a rational number, that means it is closed under addition. So हमने क्या देखा, हमने देखा हमने दो रैशनल नंबर्स लिया, दोनों को ऐड किया, इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर्स यू विल गेट द रिजल्ट that will be also the rational number, that means it is satisfied or we can say it is closed under addition. Now in the case of subtraction we need to check in the subtraction that I am taking two numbers, that is minus 5 by 7, that is a rational number, and I am taking another number that is 2 by 3 and we subtract it. What we'll get, we will get 21 as LCM, so it will be minus 15 and it will be minus 14. So what will be the answer? Minus 29 by 21. So now we can say it is also a rational number. If it is a rational number, then we can easily say that it is closed. That means if we subtract two rational number, you will get the result is also the rational number. That means it is also closed. It is closed under subtraction. सब्ट्रैक्शन की केस में भी हमने देखा कि दोनों रैशनल नंबर को हम घटाएंगे तो जो आपका बचेगा आंसर, जो आंसर होने वाला है वो भी आपका रैशनल नंबर की फॉर्म में ही आएगा। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे चेक मल्टीप्लाई की केस में। सो मल्टीप्लीकेशन, पहले हम लेंगे दो संख्या यानी दो रैशनल नंबर्स। वो रैशनल नंबर्स हम लेते हैं क्या, पहले हम लेंगे minus 2 by 3, so I'm taking minus 2 by 3 and 4 by 5. What will be the answer? For the answer it will be minus 8 by 15, and we know that minus 8 by 15 is also a rational number. If it is a rational number, then we can say the multiplication of two rational number gives you the result as also the rational number. That means it is closed under multiplication property. Then we'll check in the division. In division we need to divide two rational numbers. For example, I am taking minus 5 by 3 and I am taking another rational number that is 2 by 5.
So here the answer, it will be minus 5 by 3 multiply 5 by 2. Okay. So here we can check, that is minus 25 by 6. It is rational. But if we take another rational number, as we know, 0 is also rational number. 0 is a rational number, right? Why it is rational number? Because rational number means there should be in the form of p by q, but here it is not q. Yes, it has q, but it in hidden form. So here in this 0 we can say it is 0 by 1, where q is 1. That means it is not equals to 0. That means it is also a rational number. So suppose if we divide 5 by 3 with a rational number, that is 0, what we will get? Any number divide by 0 that gives you undefined, that is undefined. So if it is give you the result undefined, that is not possible. So that means it is not a rational number. So that means we can say it is not closed under division. ओके सो अगर हमने एक संख्या लिया जो कि रैशनल नंबर है, उसको हमने जीरो, जो भी दूसरा एक रैशनल नंबर है वहां से डिवाइड करने पर आपका क्या आ रहा है आंसर? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड जो आ रहा है मतलब पॉसिबल नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है नहीं। तो इफ इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, दैट मीन्स वी कैन से इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ओके, so in that case we have learned the proper closure properties, very important. In the case of whole number, if we add to whole number, we will get a whole number. That means it is closed under addition. In the subtraction, if we subtract two whole number, it will gives you a number that is not a whole number. So it is not closed under subtraction. In the case of multiplication, if we multiply to whole number, it gives you the whole number. The product, it will be also the whole number. That means it is also closed under multiplication. Then the division. In the division, if we divide two whole number, the result, it will be not in whole, it is in fraction. So it is not closed under division. Then in the case of integers, if we take two integers, if we add it, we will get a number that is also the integer. That means it is closed under addition. In the subtraction, if we subtract two integers, you will get a integer as a result. That means it is also closed under subtraction. In the multiplication, if we multiply two integers, you will get the result which will be also the integer. That means it is also closed under multiplication. In the division, if we divide two integers, you will get the result which is not in the integer form, that is in the fraction. So we can say it is not closed under division property. Now in the rational number, if we add two rational number, you will get a rational number. That means the addition properties satisfying. That means it is closed under addition. Now in the case of subtraction, if we subtract two rational number, you will get a rational number as the result. That will also rational number. That means we can say it is closed under subtraction. Now in the multiplication, if we multiply two rational numbers, the product, it will be also the rational number. That means we can say it is closed under multiplication. But in the division, if we take two rational numbers, first time we check that it is in rational number, but if we take 0 or if we divide the rational number with 0, where 0 is also the rational number, because in 0 1 will be the denominator or q. So if we divide any rational number with another rational number by 0, you will get the result that is undefined. If it is undefined, that means it is not a rational number. If it is not a rational number, that is not closed under division. Okay,
Now we will read the basics about the second property, the property number 2, that will be the commutative property. So what is commutativity? So here the commutative property apply here. A B is equals to B star A. Now what is this star means? Star means it is the operations. So star, it can be plus, it can be minus, it can be multiply, it can be divide sign. Okay, so that means we can say in the commutative property, if A plus B, it should be equals to B plus A, and A minus B is equals to B minus A. We have to check it is possible or not. Then the third is A multiply B is equals to B multiply A, it is possible or not. And then B divide by A is equals to A divide by B, it is possible or not. We have to check this. Okay, that is called the commutative property. So in the commutative property, first we need to check in the whole numbers. So commutative property will check in the whole number. First we'll check in the whole number. Okay, the first will be the whole number. In the addition we will check. In addition, if we take two whole number, so we can take 0 is whole number. 0 plus 7, it will gives you 7 plus 0, that is the same result. That means here A is 0 and B is 7. If we add this and B plus A, let's check what is the result. 0 plus 7, it gives you 7, and 7 plus 0, it also gives you 7. So that means it is satisfied. So here we can say A plus B is equals to B plus A. That means it is satisfied. So addition is commutative. So addition is commutative. फॉर द होल नंबर्स. सो हमने दो होल नंबर्स लिए, इस प्रॉपर्टीज में हमने इसको डाला जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो हमने क्या देखा, 0 एक पहली संख्या है जो a है, b है 7, तो इसका योगफल 7 बनेगा. तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7 प्लस 0, ये भी 7 के बराबर. तो ये जो है सेटिस्फाई करके. फिर अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन पे. सो इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन we will check, take the same number 0 minus 7. What is the answer? Minus 7. Okay, now we'll check 7 minus 0. So A plus B, here what is the answer? 7. That is not equal. So that means A minus B is not equals to B minus A. That means it is not commutative. The subtraction is not commutative. Subtraction is not commutative. Okay, now in the case of multiply, we'll check A multiply B. I'm taking 3 multiply 4 and it should be equals to B multiply A. Let's check A multiply B and B multiply A. So 4 multiply 3, what will be the answer? Here it will be 12, here it is also 12, that is equal. So it is equal, that means it is commutative. So multiply is commutative. Multiply is commutative. So हमने क्या देखा, हमने दो होल नंबर्स को अगर ऐड कर दिया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने ये सेटिस्फाई नहीं किया. और मल्टीप्लाई में हमने दो संख्या को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, यानी A मल्टीप्लाई B और B मल्टीप्लाई A दोनों बराबर आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव हो गया. फिर हम करेंगे डिवीजन की केस में. सो इन द डिवीजन, सो
Here A divide by B, and you have to check B divide by A, either it is equal or not. So I'm taking 3 divide by 5, and here it will be 5 divided by 3. Let's check 3 by 5, it gives you result 5 by 3. Is it equal? No. So that means it is not equal. So here we can say in the division is not commutative. Okay, so today we learn about the rational numbers, the integers, natural number, whole number, and rational number. Then we come to the properties. The first one is closure property for whole numbers, and for the integers, and for the rational number. Then we learn about the commutative property. Here commutative property means A and B should be equals to B and A, where the operations can be positive, plus, that means addition, subtraction, multiplication, and division. So first one I'm checking that the whole number, in the case of whole number, the addition property commutative, subtraction property not, multiply is commutative, and the division is not commutative. So thank you for this nice session. I hope it you are enjoying this session. Thank you. Bye.